वेलकम टू श्योर 60 गुरुकुल। श्योर 60 गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है इंग्लिश क्यूआईपी का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। इंग्लिश क्यूआईपी नंबर जो है 12228। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव रीड वन नॉवेल बाय प्रेमचंद। आई वांट टू रीड another novel by him. I want to read another novel by him. Select the most appropriate option to fill in the blanks. A sanguine outlet is associated with. Sanguine का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। तो किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक। The following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contain a grammatical error. The brakes and steering failed and the bus ran down the hills without anyone being able to control. Without anyone being able to be controlled. Without anyone being able to be controlled by it. एरर कहाँ आ जाएगा? सी वाले पार्ट में। The following sentences has been split into four segments. Identify the segment that contain a grammatical one. The polling was marred at many a place by attempts at ragging. The polling was marred at many places by attempts at ragging. क्या हो जाएगा? No error. Select the most appropriate synonyms of the given word. Snilting का मतलब क्या होता है? Glittering, चमकना. Sentences of a paragraph are given below in a jumble order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Since the 60s, there has been an increasing interest in human neurophysiology, which deals with the neural basis of mental activity and behavior. ठीक है, S1 है और S6 क्या दिया? सो फॉर द जनरल हैव पब्लिश्ड अ मिक्सचर ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बोल क्या रहा है S1 में? सिंस द 60s देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी विच डील्स विद द न्यूरल बेसिस ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर्स। ठीक है, सिंस 60s, जब 60s का समय था तो उस समय क्या था? देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पे था? ह्यूमन न्यूरोफिजियोलॉजी में, जो कि डील करता था किससे? न्यूरल बेसिस ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर्स के बारे में। So starting the brain and cognition is one such general. Before the 1960, when this file was concern of a small number of the investigation research articles were scattered in various neurological journals. Brain and cognition is one such general. Q has since then a number of journals devoted entirely to this area of research have appeared. It has format which is very similar to that of brain and language, a sister journal. ठीक है, behavior it is has format which is very similar to that of brain and क्या language, the sister journal. Since then a number of journals devoted entirely this area of research have appeared 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 before the 1960, when the field was concerned of a small number of investigators. Research articles were scattered in various neurological journals. Brain and cognition is one such journal. The proper sequence to should be ठीक आर। आर क्या? बिफोर द 1960। पहले तो 1960 बारे में बता रहा है कि ऐसा ऐसा कंडीशन था। ठीक है, तो बिफोर द 1960, 1960 के ठीक पहले क्या था? दिस फील्ड वाज कंसर्न ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर रिसर्च आर्टिकल वाज स्कैटर्ड इन वेरियस न्यूरोलॉजिकल जर्नल्स में। तो क्या था? ये फील्ड था। तो अगर स्टार्टिंग आर से करते हैं, ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ से खत्म। आर के बाद क्या दे रहा है? क्यू। क्यू है सिंस देन अ नंबर ऑफ जर्नल डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च हैव अपीयर्ड। ठीक है, बिफोर द 1960 when this field was a concern of a small number of investigator research articles were scattered in various neurological journals। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर क्यू एस पी। Select the most appropriate option that can substitute the underlying words in a given sentence. An expression of mild disapproval. Expression of mild disapproval क्या हो जाएगा? Reproof. How long will the people put up with the increasing economic hardship? Put up with welcome तो होगा नहीं, take easily होगा नहीं, remain satisfied होगा नहीं, क्या करेगा? Tolerate करेगा। Change the following sentences from active voice to passive voice. There is no time to waste. There is no time to waste. There is no time to waste. No time is to be waste. No time to be wasted by there. No time to be waste there. There is no time to be wasted. Take medicine in time. Medicine. Take medicine in time. Medicine should be taken in time. She said that her brother was getting married. She said, my brother is getting married.
is getting married. She said, my brother is getting married. Please do not go away, she said. She said to please her and not go away. He said, he begged me not to go away. Out of the four bold words, one word is either wrongly spelled or inappropriate. The letter of the word that is the answer. They appreciated his wholehearted contribution to the socials. Appreciate सही है. To the socials contribution सही है. क्या हो जाएगा? Wholehearted. In the question below, the sentences has have been given in indirect speech. If you do not keep quiet, I shall shoot you, he said to her in a calm voice. If you do not keep quiet, I shall shoot you, he said to her in a calm voice. He warned her to calm voice. तो warn तो होगा नहीं, warm तो होगा नहीं, warm तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा बी. She said on the phone that she would report for duty next day. She said on the phone that she would report for duty next day. ठीक है. We waited for a few days, then we decided to go her place, but she did not. We found it locked off. Even after that, we waited for her for quite a few days. The proper sequence should be ठीक है. Starting एसेंस हो रहा है. She said on the phone that she would report for duty next day. ठीक है. नेक्स्ट डे में क्या करेगा? ड्यूटी पे रिपोर्ट करेगी. ठीक. बट सी डिड नॉट. बट उसने क्या हुआ होगा? रिपोर्ट नहीं किया होगा. यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा? क्यू से. ऑप्शन खत्म. दो गो ऑप्शन बच रहा है. क्यू पी आर एस. ठीक है. बट सी डिड नॉट. ठीक. वी वेटेड फॉर अ डेज. वी वेटेड फॉर अ फ्यू डेज, देन वी डिसाइडेड टू गो हर. कुछ दिनों तक जो है वेट किया, लेकिन जब आया कि वो पता चला कि नहीं आ रही है वो, तो कहाँ गया? देन वी डिसाइडेड टू गो टू हर प्लेस. ठीक. क्यू के बाद आ गया पी. ठीक. वी फाउंड इट लॉक. क्यू पी आर. अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स. ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? एग्जिस्ट करता है एवरीबडी इन द यूनिवर्स. ठीक है. द ग्रेटर द मासेस, द ग्रेटर इज द अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट. वी call this force of attraction gravity. Normally it is very small, but when one of the bodies is a planet like the earth, the force is considerable. It has been investigated by the many scientists including Galileo and Newton. Everything on or near the surface of the earth is attracted by a mass of earth. This gravitational force depend on the masses of bodies involved. ठीक है. पहला जो है बता क्या रहा है? फोर्स के बारे में बता रहा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एवरीबडी इन द यूनिवर्स. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एग्जिस्ट करता है एवरीबडी इन द यूनिवर्स में. ठीक है. ये हो गया. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? Everything on near the surface of the earth is attracted by the mass of earth. This mass of earth, normally it is very small, but no, but like the earth, the force is considerable. It has been investigated by. ठीक है. पहले स्टार्टिंग होना चाहिए क्यू से होना चाहिए. ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द एवरीबडी इन द यूनिवर्स. ठीक है. इट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय मेनी साइंटिस्ट इंक्लूडिंग गैलीलियो एंड न्यूटन. ये खत्म, ये खत्म. दो गो ऑप्शन बचा. ठीक है. क्यू के बाद क्या आ रहा है? एस. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. इस फोर्स को कौन इन्वेंट किया है? गैलीलियो एंड न्यूटन ने. ये क्या है? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडीज इन्वॉल्व. कौन सी मास ऑफ द बॉडी क्या है इन्वॉल्व, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है. एवरीथिंग ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अट्रैक्टेड बाय द मास ऑफ द अर्थ. ठीक है. नॉर्मली इट इज वेरी स्मॉल बट. ठीक. ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्यू एस आर पी. Read the given passage and answer the question that follow. When my wife, daughter and I were traveling in a rented car through Nottingham, England, on our way to a cousin home in the northern suburbs, I become thoroughly confused by the maze of circular one-way street. Finally, we spot a policeman and pulled up to ask direction. We were surprised when he removed his tall helmet, opened the back door, and slide in beside our daughter. It will be much easier to show you, he explained. Off we went through a series of left and right turns, traffic lights, and even a short jumps up a one-way lane. The wrong way. 20 minutes later, we arrive at a main intersection. Now you will be all right, announced our guide. Just turn here, stay on the road for 8 or 9 kilometers, and you are there. With that, he opened the door and got out, replaced his helmet, and strode briskly off. The writer was confused by. Writer क्यों confused? The wrong direction by traffic cops, confusing the road signals, road map that he had taken by a network of circular roads. When my wife, daughter and I were traveling in a rented car through Nottingham. मेरी वाइफ थी, डॉटर थी, और मैं था क्या? ट्रेवल कर रहा था एक रेंटेड कार में थ्रू नॉटिंगम, इंग्लैंड, ऑन आवर वे टू ए कजिन होम.
कहाँ? अपने कजिंग होम की तरफ जा रहे थे इन द नॉर्दर्न सबहब्स। आई बिकम थोरली कंफ्यूज बाय द मेज ऑफ सर्कुलर वन वे स्ट्रीट। मेज ऑफ सर्कुलर वन वे स्ट्रीट की वजह से मैं क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। अ नेटवर्क ऑफ सर्कुलर रोड्स। द वर्ड सबहब्स का मतलब क्या होता है? द सिटी सेंटर, रिसाइड एरिया आउटसाइड ए टाउन, एन इंडस्ट्रियल टाउन। सबहब्स क्या दिया है यहाँ पे? Cousin home in northern suburbs. I become thoroughly confused by main circle of one way street. Finally, be spotted. Policeman pulled out. Suburbs का मतलब होता है रेजिडेंस एरिया आउटसाइड ए टाउन। एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप तो होगा नहीं, सिटी सेंटर होगा नहीं, रिमोट विलेज नहीं होगा, रेजिडेंशियल एरिया आउटसाइड अ टाउन। द रिस्पॉन्स ऑफ द पुलिसमैन कैन बी सेड टू बी हेल्पफुल। द टोन ऑफ द नरेशन इन द पैराग्राफ क्या है? कॉमिक। Identify the part of the sentence which has an error. The committee members stated during the review meeting that they are considering several proposals which were submitted by the various departments to improve the efficiency of internal processes. The committee member stated during the review meeting that they are considering several proposals. The committee member stated during the review meeting that they were considering several proposals. यानी आर तो आएगा नहीं यहाँ पे। Select the best express synonyms of the given highlighted words. The house proximity to the railway station made it very attractive. Proximity का मतलब क्या होता है? Near, nearness. Select the most appropriate idiom to fill in the blanks. Even after hearing about the accident, the manager choose to make a light of clip-on mix to be at sea. The seriousness of the issue. Clip-on wings तो होगा नहीं. To make light of to be at sea. Read the following descriptions carefully and choose the correct one word substitution for something that the best describe the condition being portrayed. Something that refers to the very first formal address or speech delivered by individuals in the public gatherings, official assembly or legislative house, often serving as the debate appearance of a politician's public figure or speakers, and which is typically regarded as an important milestone in their public career, reflecting their initial idea, the style of delivering and ability to engage with her audience is called what? Maiden speech. Select the most appropriate idiom to fill in the blanks. The young scientist was the first to test the revolutionary method, and in doing so, he managed to blaze the trail. पहली बार कोई चीज करना। टू ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है पहली बार कोई चीज करना। इसी के साथ QIP को खत्म करते हैं।